Look at this terrain. The Balkan Peninsula is defined by jagged peaks and deep, isolating valleys, a crossroads of geography that naturally separates the people living across it. This diagram shows the political reality of the region in the 19th century. Despite that fractured physical geography, the map is swallowed by two enormous authorities, the Austro-Hungarian Empire to the north and the Ottoman Empire sweeping up from the south. Inside those borders lived millions of Serbs, Greeks, Bulgarians, and Albanians. To the distant emperors sitting in Vienna and Constantinople, these distinct groups were simply subjects to be taxed and governed. To hold these sprawling territories together, the imperial system required strict top-down control. Any expression of individual ethnic identity had to be suppressed to maintain the stability of the wider empire. But a radical new ideology was moving across Europe that challenged this entire power structure. It was called nationalism. The logic of nationalism is straightforward. If a group of people share a common culture, language, and history, they possess an inherent right to govern themselves. Apply that logic to a multi-ethnic empire, and you immediately run into a mathematical problem. An empire simply cannot exist if its internal components demand their own sovereignty. When those ideas reached the isolated valleys and distinct ethnic communities of the Balkans, the region became a geopolitical pressure cooker. The tension broke in 1821, when the Greek population launched a localized rebellion against Ottoman rule. Here, abstract identity turns into physical resistance. Over nearly a decade, Greek civilians formed organized militias and fought a brutal war against the Ottoman military. By 1829, the conflict ended with the formal establishment of Greece as a fully sovereign state. That victory proved to the rest of the Balkans that the Ottoman Empire could be beaten, and that breaking away to form your own country was actually possible. The success of the Greek rebellion demonstrated that the imperial status quo was no longer permanent, encouraging other ethnic groups across the region to consider their own paths to sovereignty. Soon, Serbian and Bulgarian ethnic groups launched their own coordinated uprisings. They initially demanded local autonomy, which quickly escalated into demands for total independence. All of this was happening against the backdrop of a declining Ottoman authority, earning the empire a highly specific nickname during this era, the sick man of Europe. This cartoon illustrates exactly how the international community viewed that decay. The Ottoman state is depicted as an exhausted patient, too weak and overextended to put out synchronized internal brushfires without outside help. With the Ottomans too frail to maintain control and local nationalist movements increasingly motivated, the rigid imperial structure in the Balkans faced a violent collision of factors that it simply could no longer withstand. This map shows the legal redrawing of physical boundaries following these nationalist wars. Look at the central shaded regions. We see newly carved-out entities labeled as an independent Serbia, alongside a newly defined Bulgaria, completely replacing the Ottoman territory. If you track the remaining borders down towards Constantinople, you can see just how drastically the footprint of actual Ottoman control has receded. An invisible idea based on shared language and history physically overwrote centuries of hardened imperial borders. Across the 19th century, marginalized subjects discovered they could leverage their shared identity to push out distant emperors and become sovereign citizens. These Balkan uprisings signaled the end of the traditional imperial model in Europe. By tearing down those monoliths, Balkan nationalism helped build the nation-state, the system of organized borders and self-governing populations that dictates how our map is drawn today. सोचिए, हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की उम्मीदों में फंसे हुए हैं। कोई समाज क्या कहेगा, कोई रिश्तेदार क्या सोचेंगे। इन्हीं सवालों के बीच हम धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। आपने कभी गौर किया है, हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की खुशी का पता ही नहीं चलता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब अंदर से आवाज उठती है, अब बस, अब मुझे खुद के लिए जीना है।
और यही वो दिन होता है जब असली बदलाव शुरू होता है। जब आप खुद को चुनते हैं तो आप ना कहना सीखते हैं। आप उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो आपको तोड़ती हैं। आप उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में मुश्किल होती है। लोग आपको सेल्फिश कहेंगे, बदल गया कहेंगे, एटीट्यूड आ गया है कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, आप पहली बार खुद के लिए खड़े हो रहे होते हैं। और यकीन मानिए, जब आप खुद को चुनते हैं तब आपकी एनर्जी बदल जाती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सोच साफ होने लगती है। आप समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी किसी और की अप्रूवल से नहीं चलती। आपकी खुशी किसी और की परमिशन पर डिपेंड नहीं करती। खुद को चुनना मतलब अपनी वैल्यू समझना, अपने सपनों को प्रायोरिटी देना, अपने मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखना, और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। याद रखिए, कोई भी इंसान तब तक आपको सीरियसली नहीं लेगा जब तक आप खुद को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए आज एक फैसला लीजिए। दूसरों के लिए जीते जीते थक गए हैं तो अब खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को चुना, उसी दिन आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। और शायद पहली बार आप वो जिंदगी जी पाएंगे जिसके आप सच में हकदार हैं।